started for me, and it was in the 4th year of my degree that I realized that okay, I'm not gonna do that. मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है. Literally asking for the shows कि hi, this is आकाश शर्मा और ये गिटार है मेरे पीछे एंड मैं गाना गाता हूँ, तो मुझे शोज चाहिए यार. मैं तुम्हारा. तो वो हमेशा एक ही जवाब आता था कि ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पे अपने वीडियो सेंड करना, अपना कंटेंट शेयर करना एंड देन विल मेल कभी आया ही नहीं. वो मेल कभी नहीं आया मुझे. पूरा I can कट हो गया. क्यों? हमें रुकना है यार, इतना लंबा नहीं बोलना, पसीना आ रहा है. 1 2 मैं पहले फिर से 1 2 3 गो करा नहीं है. अच्छा. 1 2 3. Hi and welcome to #NotSoFamous with Deepy Narang, and I am today here in conversation with someone special that who was born to be someone and became an engineer, and then suddenly with his huge conscious and the mesmerizing voice he became that someone for which he was born to. When I heard him for the first time, I was thinking that I have gone through a breakup, and then I realized, oh my god, I was never into a relationship. So discussing the huge journey that he experienced all the way from Shai Patiala to Mumbai, he is here with us. Without wasting your time, I will call upon Mr. Akash Sharma. So here we have Akash Sharma. You. Thank you so much, Bhaiya, first of all for that introduction. But I want to tell you all, he's not a fan. In fact, I admire him a lot, and he's like my elder brother. I have learned so many things from him. So let us just skip the anchoring part and just get back to being brothers. That's what we are. Let's just be real with you, Akash. Exactly. That when I have heard you for the first time, I am still your fan from the very very first day. We met in a guitar class. I must tell you that I can play guitar a little bit, but I am not a good singer. You know that because I have tried. मैंने एक बार स्टेज पे ट्राई किया था और किसी ने नहीं सुना था. बिलीव मी. He's a very good singer. और थैंक यू. I have to say it. ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे बोलना गिव एंड पड़ेगा. टेक है. हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था. देन वी विल प्रेज ईच अदर. ओके. सो आकाश. ओके. सो अभी फास्टली एंड शॉर्टली वी वांट टू नो दैट व्हाट इज आकाश शर्मा. I want to first of all pick up from where he left when we met in the guitar class. That was the time when I was doing the first year of engineering. And उस time पे I had no idea that why I'm learning the guitar, or even I had no idea that one day I'll be able to sing, or I will be singing on the stages and performing with Deepak Bhaiya. That's where we started, if you remember. Yeah. That's we the first time we performed together on the stage, and we did anchoring also, just like he's doing right now. So he was co-anchor. Believe me that he can be a good co-anchor, but I cannot be a good singer. well. So yeah, that's when it started for me, and it was in the 4th year of my degree that I realized that okay, I'm not gonna do that. मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और करना है. And graduation के बाद I gave one interview. I got selected in the company, but I did not take the job. As far as I know that you have never. I never did the job. I got selected, but I just left it. And तो मेरे घर वालों ने बोला कि just go for the government exams. And मुझे याद है दीपक भैया called me. भैया, even you don't know this. He called me. He said, तेरे को पता है पटियाला में shows हो रहे हैं और like live singing का trend चला है नया and people are performing and they're getting good pocket money. So just try somewhere. And I remember मैं निकला, मैंने 10 restaurants, 10 cafes try किए and I lost all hope. सबने मना कर दिया. सबने बोला कि भाई हमारे पास पहले से ये singer है या फिर हम नहीं कर सकते. तो मैं shopping करने गया. Shopping करने के बाद निकला and देखा कि Beer Street नाम की एक जगह नहीं ओपन हुई है. एंड दैट वाज मैंने सोचा कि एक लास्ट ट्राई मारता हूँ भैया. फ्रॉम दैट प्लेस आई स्टार्टेड माय करियर इन सिंगिंग. दे बुक्ड मी फॉर द होल ईयर. आई परफॉर्म देयर. दैट्स हाउ माय जर्नी बिगन. And believe me, I've heard you over there in Beer Street, and then some level you cannot beat. So he's that unbeatable level. So I have heard him. I guess you have done a lot of road shows also, like performing on the road without a band, without speakers, right. And in this hot place that like we are now doing it. So it's very good. So how did you do it? Like with the feel. So a friend of mine came to me and he said we are going to conduct a social experiment where we are going to help people to
come out of their daily routine, daily stress and depression if they are having any, and we're gonna just perform randomly for the people. And the very first day when we performed for them, we never expected that a huge crowd will be in front of us, and it was an evening. The sun was setting down, and जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, लोगों की flashlights on हो रही थी. It was like a concert in the Baradari Garden. And the best thing about that incident was that after the show, we got so many Instagram messages that I was dealing with a trauma, and you guys helped us out with your soothing music, with your performance, and that really meant a lot. So I'm sorry to disturb you, cut you in between. Guys, what do you think? I like knowing about Akash. He has done a lot of road shows. Like I have told you, इतनी गर्मी में यहाँ पे इन लोगों ने किया. I heard मैंने बहुत लोगों की स्टोरी जो मेरे नोन थे, मैंने उन लोगों की स्टोरी में देखा. I am not आकाश ने मुझे कुछ नहीं बताया that he is going to do this something like this. मैंने उनकी स्टोरी में देखा. And why don't you try here? Like यहाँ पे भी गर्मी है, यहाँ पे भी बाहर है. So एक गाना हो जाए. From Patiala to Mumbai. First हम लोगों को वो गर्मी एक्सपीरियंस करनी है. तो आकाश is all ready to sing his song. So आकाश हमें क्या सुनाने वाला है? दिल तोड़ने वाला या दिल जोड़ने वाला? It is a mixture of both the things. It is a song from Kabir Singh, और इसका नाम सुन के लोगों को लगेगा ये पक्का दिल तोड़ने वाला because yeah, exactly. Okay. But yeah, it's an Arijit person, so I really like the song. So this is for all you guys. Go for it. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे. God told me, you made me feel once again that I have gone through a breakup. But believe me, guys, I was never having a girlfriend. Yeah, not one. Oh, that's a hard story to listen. So okay, Akash, moving on to the next, like this road show, like you have given us example that practically he's shown that how did he perform in crowd in this hot temperature, and then you moved to Bombay, and how was the journey? Like how did you maintain this, like from getting seven or eight or clubs saying that no, we don't need a performer, and then you reached some on height as a vocalist. How was the journey? So the journey, it was really unexpected, and it had its ups and downs, and it was not directly from Patiala to Mumbai. It happened in Chandigarh. It really hit me hard in Chandigarh actually, because that's where I had my worst experience as a live singer. I'm not kidding. वहाँ जाके it was like आर्या पार मेरे लिए कि यार अब पटियाला से चंडीगढ़ चले गए, अब इससे आगे ही जाना, पीछे आने का रास्ता नहीं है. But Chandigarh hit me so hard that there was a time when I lost all the hope, and honestly there was a huge fight मेरे घर पे, and my father was like कि तुझे कुछ करना है कि नहीं, like either do some job or just do something with your life, be productive, do something, make something out of your music and all. And that is when I decided that मुझे मुंबई जाना है. मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं है. I mean, I have some relatives but hardly on talking terms and all. So no support, and I was just like it's Arya Par literally. So I just took a step. I went there for 2 months. I was just sitting. Okay, मैं आ गया, मुझे क्या करना है? I had no idea. So I had really no idea how to get started in Mumbai. मैं कैसे shows करूँ, मुझे कैसे मैं किन लोगों के पास जाऊँ? I had no idea. So I was going just door to door to every club and asking for the shows, literally asking for the shows कि hi, this is Akash Sharma और ये गिटार है मेरे पीछे एंड मैं गाना गाता हूँ, मुझे shows चाहिए, I want to perform at your place. तो वो हमेशा एक ही जवाब आता था कि ये हमारा email ID है, इस पे अपने वीडियो सेंड करना, अपना कंटेंट शेयर करना, एंड देन वो मेल कभी आया ही नहीं. वो मेल कभी नहीं आया मुझे. पूरा I can feel that pain, Akash, like when people say that we would
call you back and then they Exactly. but actually उन्होंने सुना नहीं था. So we have a story आकाश आपके बारे में. Like मैंने बहुत बड़े इंसान के एक सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने देखी थी वो स्टोरी. Right. मैंने आपसे नहीं जाना, जैसे कि आपके एक शो इन्होंने जैसे एक रोड साइड शो किया था, वो मुझे नहीं पता था, मैंने किसी और के उस पे देखा, आकाश से नहीं पता चला. एंड देन आई गॉट टू नो अ स्टोरी फ्रॉम अ बिग पर्सन ऑन अ सोशल मीडिया हैंडल. वो स्टोरी क्या है आकाश? वी वांट टू नो. So I was very lucky one day. I was sitting idle at my flat and मुझे फोन आता है. मेरे पास लिटरली उस टाइम पे कोई शोज नहीं थे. मुझे फोन आता है कि भाई एक शो करेगा. मैंने कहा वेट कर लेंगे. मैंने कहा पेमेंट कितनी है? तो वो बहुत आई वुड रिवील इट बट इट वाज वेरी बहुत कम थी वो गुजारे जितनी भी नहीं. बहुत सारी ऐसी कम होती हैं जो Yeah. नहीं डिस्कस करी. तो मैं फिर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे कोई लाख रुपए का कोई शो दे देगा. आई एम लाइक चलो कुछ भी ठीक है. ओके आई गॉट अ शो इन माय हैंड. आई सेड ओके आई विल डू इट. आई वेंट टू द प्लेस. इट वाज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ डांस. And while I was performing, I had no idea what's gonna happen. I'm performing in an empty crowd. The sound check is going on. There is no crowd. It's a new place. The waiters are sitting at the table and I'm singing for the waiters. And the next moment, what I say is that from the front door, it's like an open launch. The front door, Remo D'Souza's son, the dancing legend, he enters with his wife, and I see him. And it took me at least 30 seconds to digest, to believe that what I'm watching is real. Because हम लोग पंजाब से उठ के बॉम्बे गए हैं, हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना कि पहले या दूसरे शो में. You won't believe me, I felt so proud. I have seen him in Remo D'Souza sir's story that he posted his story literally and he was waving his hands. What I have seen in the story because उनका मोबाइल हिल रहा था. And so what happened was that he was singing. There was no crowd. Only Remo sir in front of me. And there was this stupid thing I did. I was like, hi Remo sir. Remo sir turned around and he's a very genuine, one gem of a person he is. He turned around, he gave me a smile and he was like, hi. And मेरी वहाँ पे feelings का मतलब मेरा ऐसा flood आ रहा था उमड़ के. And मैंने बहुत कुछ बोला वहाँ पे. And then I said कि sir I want to dedicate one song for you. और मैंने उनके गाया, उनके लिए मैंने song गाया पहली नजर में. क्यों नहीं सुना देते? Okay. Let's see, guys. Okay, so this is what I sang for And Remo sir. this one is once again for Remo sir. This is Remo sir, yeah. This song is always for Remo sir now. इसके बाद मैं जब भी गाऊंगा. Guys, this is the first song that he sung specially for Remo sir and dedicated once again to Remo sir. And it was a stupid dedication, but he loved it. Okay. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया. जाने क्या होगा क्या पता. इस पल को मिलके आज ही ले जरा. मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा. जाने जान दो हो जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा. Baby I love you, sir I love you. That's what I said. Sir I love you so much, baby I love you. That's just amazing. Of course, उनको बहुत पसंद आया. So Yeah. that is something I think made you stay there in Mumbai. So Well, is that a reason? that is one of the reasons. That is one of the reasons. And अब ये वीडियो बनी रही है तो I don't know if Remo sir will watch this, but I really want to thank him क्योंकि अभी बहुत कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में मैंने. बहुत ऐसा नहीं कि मतलब मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो I am at some better place in my life. It is just that this is one of the milestones that I have achieved, which I never thought I will. And the best thing that happened was कि Remo sir, after the performance, he hugged me. He hugged me, and That's a humble thing. That's a a humble very humble gesture. and हम सोचते हैं कि चलो यार वो आर्टिस्ट है, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो, बट देयर इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव वाइब इन दैट पर्सन. एंड इट जस्ट नॉट हैपन फॉर दैट मोमेंट. आई केप्ट मीटिंग हिम एंड व्हेन एवर आई मेट हिम मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस इंसान को पहली बार मिल रहा हूँ.
हर बार एक फ्रेश फीलिंग से आते थे, हर बार एक नया पॉजिटिव बूस्ट देके जाते थे एंड ही इज अमेजिंग पर्सन। सो वाइल कंक्लूडिंग, मैं सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना जो आपका ड्रॉप है जो आप हाँ। हमेशा अपने साथ रखते हैं, जस्ट लाइक आप उसको उठा लें। अभी तो रखा था मैंने। एंड नहीं, हम लोग खत्म नहीं होंगे, वी जस्ट वांट यू टू सिंग एवरी टाइम वी मीट यू। Okay. सो आकाश, पहले मैं 2 लाइन आकाश के बारे में बोलना चाहूंगा। व्हाट आई हैव सीन, लाइक व्हेन यू नो अ पर्सन बाय व्हेन ही सेज समथिंग, यू डोंट वैल्यू इट। व्हेन यू सी और यू हियर समथिंग अबाउट हिम फ्रॉम समवन एल्स, लाइक एक कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज क्या था? आई हैव हर्ड फर्स्ट प्राइज था लाइव सेशन विद आकाश शर्मा, और वो मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड यू बिलीव कि मेरे साथ वो पहला सेशन उनका था, मैं जीता नहीं वो कंपटीशन, मुझे सेशन फ्री में मिल गया वैसे तो। एंड देन हियरिंग अबाउट डिफरेंट शोज, डिफरेंट स्टोरीज। तो आकाश, आप लोग काफी लोग जो है करना चाहते हैं, दे आर डूइंग समथिंग दैट they don't want to do it, but they are doing just for the society. What do you want to say them, like in conclusion? So मैं अभी ऐसी स्टेट में हूँ कि आई एम फॉलोइंग व्हाट माय हार्ट इज सेइंग। एट द सेम टाइम माय पेरेंट्स, बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब एंड बिकॉज अभी वो सक्सेस का लेवल नहीं आया, बट माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी बिकॉज मेरे पापा मिले थे रेमो सर से एंड उनको कभी मतलब बिलीव नहीं था कि हम लोग ऐसे मुंबई जाएंगे और ही विल कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ रेमो सर, ही विल सी हिज परफॉर्मेंस। These are the little small things that has happened, and this journey is beautiful because of these moments. And after that, many of my friends who are music enthusiasts, they started asking me like, what should we do now? Because you have taken a leap of faith. It is a leap of faith. I think you should take it right away. I think you should not think about what you are leaving behind. Just go for it, man. देखा जाएगा। और बाद में रिग्रेट करने से अच्छा आप एक बार ट्राई कर लो। मैं ये नहीं कहता कि उसमें घुस के उसी में लगे रहो और घर वालों को भी डिसअपॉइंट कर दो, बट जस्ट बी प्रोडक्टिव इन व्हाट यू डू एंड डू इट विद कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेटली यू विल मेक इट समडे। And you know what? I must say that's super conscious. And what he is saying, that believe your dreams and follow your heart. That's right. Do your job, whatever you're doing, your parents do, because your parents first, they come first, and do what you are doing, but follow your dreams too. That's right. And this is not an advice. This is just something that I am experiencing while I'm in my journey. और मुझे उसके रिजल्ट मिल रहे हैं. And just be positive. That's what I'm doing. So positivity is the key. Optimism is the key about what you are doing. All the best. That's a rolling ring on my head. It's like peace, you know. So we would end up this interview by a very fantastic melody by none other than Akash Sharma. Okay. गहरा है अपना प्यार, सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बात, कहाँ से ये हवा आई, घटा ये काली क्यों छाई, जुदा हो गए हम, हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, थी कैसी यादें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। So hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I just want to hear that few lines that you have prepared, like just very recent.
that few lines, just two. That's just my choice. Sorry. Okay, so this is a very trending song. It's the latest song from the movie Dil Bechara. Okay, let's do it for Sushant Singh Rajput because it's a song from his movie. For legacy of. और बहुत प्यारा song है. It's composed by A.R. Rahman sir, so you better expect the best from him. तुम ना रहे मेरे तो क्या, तुम ना रहे मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा, रिश्ता रहा असरे दिल का, ऐसा मंदिर मैं तुम्हारा किनारा रहा, मैं तुम्हारा And this is his love for speaking, and I just want to tell you that I would be coming once again on hashtag Not So Famous with Deepti Narang with a lot more important stories which are yet to be discussed. So I will be signing off. Thank you so much, Akash.